हेलो वेलकम एवरीवन। मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं एंड आई रियली थैंक यू ऑल कि आप सभी ने अपना टाइम स्पेयर किया और इस सेशन को ज्वाइन किया। आई नो योर टाइम इज प्रेशियस एज पेरेंट्स एंड यू हैव स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम टू जॉइन अस टुडे ऑन दिस सेशन। आई रियली एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड you know me, but let me introduce myself formally. I am Dr. Ajay Gupta. I am a pediatrician, and I actually have been practicing for the last 26 years and helping parents achieve good health for their children. And I always believe that building immunity naturally is a better option than treating the children, and I believe in using fewer medications. And I really want to help you all parents in raising healthy and happy children always. So that's why I keep on sharing my knowledge on different platforms on social media. So today I'm here. So I'm bringing this series of say different sessions with different doctors so that we could handle different problems in your children and with respect to say your family. कोई भी दिक्कत किसी को भी घर में हो, बच्चे को हो, उसके मुताबिक हम आने वाली सीरीज में बात करते रहेंगे। तो ये पहली सीरीज जो है उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज skin problems in children during winters. So this is our first session. So we would be bringing more in the near future. So today's topic is skin problems in children during winters and हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं पेरेंट्स के हम उनको एक एक करके अपने एक्सपर्ट जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अदिति झा उनके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे में अगर आपने कोई क्वेश्चन हमें अभी तक नहीं भी भेजा है तो आप अब भी लाइव कमेंट सेक्शन में जाके उसको भेज सकते हैं, राइट? तो लेट अस इनवाइट अवर गेस्ट स्पीकर ऑफ द डे टुडे, डॉक्टर अदिति। So, welcome, Dr. Aditi, and we really are very thankful to you for sparing your valuable time for the parents to discuss the common skin problems that happen during winters. So, before we start, I would like to just say a few words about Dr. Aditi. Dr. Aditi is a dermatologist with more than 10 years of expertise, and she has been graduated and postgraduated in dermatology, that is skin specialty from country's most premier institute, that is All India Institute of Medical Sciences, and years of senior residency she has done from another reputed institute of India, that is Safdarjung Hospital. And she has done clinical research fellowship in National Skin Center in Singapore, which is in a very prestigious institute. And she has gained experience in different techniques like lasers, advanced dermatosurgery techniques, and माइक्रोस्कोपिक कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। तो बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स में वहाँ पे एक्सपर्टाइज हासिल करके डॉक्टर अदिति फिर इंडिया में वापस है हमारे साथ। और शी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग जर्नल्स एंड राइटिंग चैप्टर्स इन डिफरेंट बुक्स। सो हमारे साथ आज बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो इनके साथ आज हम अपनी शी विल बी शेयरिंग हर नॉलेज विद अस, तो हमारे क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे डॉक्टर अदिति। Welcome, Dr. Aditi. Thank you so much, Dr. Ajay, for that very kind introduction. And I feel great to be a part of this series in which you believe in educating the kids and the parents alike. And many a times we do end up just writing prescriptions for the kids, and the parents' apprehensions are not given a forefront. And I have seen that you, as a pediatrician, have been addressing that quite a lot, and I'm happy to be collaborating with you on this regards and addressing the concerns that basically bothers the parents and kids more, and which the doctors do not focus more. So yeah, humbled and feel great to be a part of this. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदिति। तो ऐसे करते हैं कि बिना आगे कोई टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। मैं फिर से कहता हूं कि ये सेशन लाइव है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हमारे इसी फेसबुक पेज पर दैट विल बी स्टेइंग फॉर लॉन्ग। सो यू कैन, इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल एंड यू थिंक दैट दिस कुड हेल्प अदर पेरेंट्स ऑल्सो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी जिन्होंने कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं भेजे हैं वो अपने क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी लाइव सेशन को अटेंड करने का
सबसे सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसमें पार्टिसिपेट करते रहें उसमें. The fun is in actually participating in that so that you could gain more and you could be present in the session. So agar aap, if you are ready to participate and if you are actually with us, so please type yes in the comment section so that we know that you are here alive and live. So पहला Yes. क्वेश्चन डॉक्टर अदिति ले लेते हैं जो हमारी एक जी सर. मदर है. So she said, my little one is 15 years old and his skin on the face is very dry and she has been advised oleatum soap by her pediatrician. पर उससे कोई चेंज या कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो what should I apply for the dry skin? And she Right. also has another question which she says that the area is getting dark also. And what should I do? Right, right, right. So yes, this is a very common problem during winters for kids and adults alike. And since this session we are focusing for kids, I'll focus more on that. I hope I am audible enough. Now, the dryness on the skin. Yeah, the dryness on the skin can be the normal dryness, which is a normal variant of the skin. The skin gets more dry during the winters. And then there are specific conditions which can specifically lead to dry skin, which is like atopic dermatitis. So, it can be very difficult. है ना? इस normal variant of dry skin और atopic dermatitis को एक normal person के लिए differentiate करने में difficulty हो सकती है. So what I would generally suggest is that, anyways, अगर हम atopic dermatitis को भी treat करते हैं, तो पहले हम general measures को follow करते हैं. So applying a soap is a part of your cleaning the skin. It is not hydrating the skin. So what I would recommend is that oilatum soap is good enough. It is good for using for sensitive skin and all. But the most important aspect in managing dry skin is using emollients, that is moisturizers, right? And more so during the winters. Now, which moisturizer to apply and how many times to apply is again a very common question. So I do recommend uh, applying a barrier based moisturizer, a barrier cream, which can be normal coconut oil, which can be Vaseline, or which can be prescribed specifically by your dermatologist, to be applied at least 2 to 3 times a day during winters, and specifically to apply it just immediately after bath. So this is the exact answer to the question. Now, the other aspect pertaining that the area is getting darker day by day. So it is a common phenomenon. Dry skin does tend to get darker, right? So the first step again in management even of that condition would be to hydrate your skin very well. So apply a moisturizer. It can be a coconut oil, it can be Vaseline, it can be any prescription moisturizer, and it has to be applied 2 to 3 times a day. Okay, thank you for giving so elaborative answer. अगला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे के ना चीक्स रेड हो जाते हैं विंटर्स में, तो उसको रायना पत्रा पूछ रही है कि रेड चीक्स के लिए मैं क्या करूं बच्चों के. जी. Right. So yeah, we might find that the answers are eventually getting to the same conclusion, but this is how the skin is. So red cheeks, especially in infants, somebody who is like 1 year of age, can be a manifestation of atopic dermatitis. एटोपिक डर्माटाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन में एक बैरियर का प्रॉब्लम होता है. जैसे हमारी स्किन मल्टीपल लेयर्स में बनी हुई होती है और उसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है फिलाग्रिन या प्रोफिलाग्रिन. उससे हमारे स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन कर वो उससे हमारा स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन होता है. जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, प्रोफिलाग्रिन या फिलाग्रिन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनमें क्या होता है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हो जाती है. इसका मतलब है कि एपिडर्मिस मतलब स्किन सेल्स के बीच से वाटर क्रीप आउट करके बाहर इवेपोरेट हो जाता है. तो स्किन वो बैरियर बना नहीं पाती है उन लोगों में. तो इसीलिए ऐसे बच्चों में या इवन ऐसे एडल्ट्स में भी हमें वो बैरियर को एक्सटर्नली रिप्लेस करना पड़ता है. सो अगेन बैरियर क्रीम्स, इमोलिएंट्स मे बी रिच इन सेरामाइड्स, जो कि उस चीज को कॉम्पनसेट कर पाए, जिसके कारण हमारे जो बॉडी में वाटर लॉस हो रही है उसको हम कहीं ना कहीं ब्लॉक कर पाए.
तो जो इनका क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे का चीक्स रेड हो जाता है, सो अगेन रेडनेस ऑफ द चीक्स कैन बी अ नॉर्मल फेनोमेना इन विंटर्स फॉर इन्फेंट्स, राइट, बिकॉज उनका ओवरऑल वैस्कुलेचर हमारी फेस की ज्यादा होती है, और कई बार फ्लशिंग के कारण भी रेडनेस हो जाती है। बट अगर रेड चीक्स के साथ साथ वहां पे थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है, या फिर आपको ऊजिंग दिख रही है कि स्टिकी फ्लूइड निकल रहा है, थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, so that is an indication of a dermatitis which can be atopic dermatitis. I would recommend to visit a dermatologist to seek further opinion and further opinion on the management of that. But अगर इतना अगर घर घर पे भी वेस्ट अगर कुछ करना चाहें, तो अगेन द आंसर इज हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, मॉइस्चराइजर, बैरियर क्रीम्स, वैसलीन, कोकोनट ऑयल और एनी थेरेप्यूटिक मॉइस्चराइजर, दैट शुड बी इनफ। हाँ, इसके साथ ही एक्चुअली आपने जैसे ये बताया कि मॉइस्चराइजर एंड ऑयल, तो ये कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन ऐसे है कि सर्दियों का मतलब ड्राइनेस और ड्राइनेस का मतलब कोकोनट ऑयल, कोकोनट जी ऑयल और मॉइस्चराइजर एज यू सेड। तो अब जी ये भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा कोकोनट ऑयल है या कौन सा ऑयल या कौन से मॉइस्चराइजर हम यूज करें। अच्छा, फिर उनका कुछ जो न्यू पेरेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक होता है कि हमारे न्यू बॉर्न बेबी के लिए, इन्फेंट के लिए जो कि बहुत छोटा है, उसके लिए कौन सी हम ऑइंटमेंट्स, कौन सी मॉइस्चराइजर्स या कौन सा ऑयल यूज करें। तो दे वांट टू नो कि वेदर कोई एक तरह का पर्टिकुलर ऑयल ज्यादा फायदा करता है या कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स शायद नुकसान करते हो। दे जस्ट वांट टू बी सेफ। सो जी व्हाट इज योर आंसर टू दैट? जी, yeah, I think their concerns are really valid, because yeah, there are a lot, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और ऑयल्स के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हाइड्रेशन के लिए जब हम ऑयल्स यूज करते हैं। सो इन जनरल जो हम डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल इज कोकोनट ऑयल। जनरली गोले का तेल, नारियल का तेल अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट कोकोनट ऑयल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड oil that we ask the parents to apply to their kids. Having said that, there is no harm in applying soybean oil also, or for that matter, other kind of oils. One specific oil that we do not recommend is mustard oil, because it has some irritant effects, can have some irritant effects on the skin. So that is why we do not recommend mustard oil. But apart from that, coconut oil or soybean oil, or some people also use almond oil and peanut oil, all of them can be used without any safety concerns. तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस शिवांगी का भी ड्राई स्किन पे था, वो आपने आंसर कर ही दिया है। उषा सिंगल का भी ड्राई स्किन पे ही क्वेश्चन था, आई थिंक दैट हैज आल्सो बीन आंसर्ड। पर उषा जी साथ में ये भी पूछ रही हैं कि माय स्किन हैज बिकम ड्राई आफ्टर माय फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड इट इज नेवर लाइक बिफोर, सो व्हाट शुड आई डू? Right. Generally, a person with dry skin will not present with dry skin after pregnancy. It could have been the effect of some hormones, but it is not the general phenomena. Sometimes some conditions appear at some point of time, and we have a coexisting life event happening that time. So we can feel that there is a correlation between the two. Right. So that can be the phenomena. But even if it is so, there should be no link with pregnancy. But even if it is so, I think sometimes what happens is that we also do change. We have a tendency to change our detergents, our soaps, our showering gels, and something. So we should have a good look on that as well. Somebody who has an inherently dry skin should be using better cream based soaps or gentle cleansers as such. That is true for the face as well as for the body. Sometimes people use salicylic acid based cleansers, which is again not suited for somebody who is having a dry or a sensitive skin, because salicylic acid is an exfoliant. वो एक तरीके से आपका स्किन को भी एक्सफोलिएट करता है, और आपके स्किन का जो सिबो ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस करती है. सो वी डू रिकमेंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश इन somebody who has acne. But if somebody is using that face wash or that soap or that detergent for dry and sensitive skin, it can actually increase your sensitiveness and the xerosis and the dryness on your skin. So that can be so. And again, dry skin, if somebody has dry skin, does not have oozing, itching, a moisturizer and emollient should be good enough.
But if you do see any kind of itching, oozing, along with some redness or maybe intense irritation, you should visit a dermatologist. There can be a coexistent eczema, which is known as endogenous dermatitis. अच्छा, हैविंग सेड दैट देयर इज ऑल्सो अ कंपोनेंट जिसमें कि हमें एक तो एंडोजिनस डर्मेटाइटिस होती है जिसमें कि आपका बॉडी का टेंडेंसी होता है ना, एक्जिमा बनाने का। एंड देयर कैन बी एक्सोजिनस कॉजेस, मतलब बाहर का भी कोई कंपोनेंट होता है जिसके कारण भी हमारे स्किन में खुजली होती है। जैसे कि हम मॉनसून्स में बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं कि पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ था, अभी होने लग गया है। तो हमारे सराउंडिंग्स में इंडिया में जो मोस्ट काफी कॉमन एलर्जन है उसको कहते हैं पार्थिनियम, लेमन लैंग्वेज में गाजर घास कहते हैं उसको, कांग्रेस ग्रास कहते हैं। बंजर जमीनों में उगता है, कई बार आसपास वाले एरिया में, चंडीगढ़ में बहुत सारे हैं। सो उसके जो फूल होते हैं और उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं उस दे कैन बी एलर्जेनिक। एंड अगर वो आके हमारे बॉडी के पार्ट्स में डिपॉजिट होता है, उसका जो एलर्जेनिक कंपोनेंट्स होता है, तो उसके कारण हमारे पूरे बॉडी में इचिंग हो सकती है। एंड इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज। इट कैन जस्ट मैनिफेस्ट एज आईलिड डर्मेटाइटिस की बस आईलिड्स में हो रहा है, फ्लेक्चर्स में हो रहा है, या फिर कई बार लोगों को पूरे बॉडी में भी उसके कारण जो है खुजली होनी शुरू हो जाती है। सो या दीज आर दिस कंपोनेंट्स, बट ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. So somebody which is getting difficult to manage by your own, so the crux is something which is getting very difficult to manage by your own, is not improving by moisturizers, yeah, antihistamines. That is an indication to visit your dermatologist. Let him or her decide what can be the causative agent, so that your further treatment and management can be planned accordingly. I hope I Right. have answered her questions right. Yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज ए नॉलेज दैट इज बियॉन्ड, खुद से हम कई बार एज ए डॉक्टर्स भी ऐसी चीज तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपने बड़ी बढ़िया से एलैबोरेट करके बताया कि कैसे किस चीज से हम वी कैन बी मोर कॉशियस अबाउट। तो जी ऐसे सर। ही एक क्वेश्चन है, मिस रेनू पूछ रही हैं कि स्पेशली जो पेरिनियल एरिया है वहां पे बड़ी बारी बारी से बच्चे सुसु करते रहते हैं, तो फिर वो गीले होते रहते हैं, फिर वो हम उसको क्लीन करते रहते हैं, उससे भी वो एरिया ड्राई हो जाता है। फिर इतनी बार तो मॉइस्चराइजर लगाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसी हॉट एरियाज में भी ऐसे ड्राइनेस ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इन ए वे वेस्ट के बिलो एरियाज दे गेट ड्राई टू द मोर एक्सटेंट आई वुड से। तो वो पूछना चाहती हैं कि ये डार्क हो जाती है ड्राइनेस के कारण हो जाती है, या इसको मतलब कैसे मैनेज करें या कैसे प्रिवेंट करें? जी, this is a very important question, especially for new parents and like especially in children of 1 to 2 years of age, because that is the time when they are wearing diapers. And so I will take a good amount of time to elaborate on this. So there are two parts on this. एक है कि अगर डायपर रैश हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और दूसरा है कि हम होने ही ना दें, हम प्रिवेंट कैसे करें. So in kids, और in fact that matter for anybody, बिकॉज किड्स का स्किन हम जो एडल्ट से थिन होती है, पतली होती है, ज्यादा सेंसिटिव भी होती है, और स्पेशली स्किन इन एरियाज में जैसे कि पेरिएनल एरिया, पेरिनियल एरिया, और इनफैक्ट इवन ऑन द फेस, the skin is very sensitive and is thinner than on other parts of the body. Now स्टूल एंड यूरिन कैन हैव इरिटेंट इफेक्ट्स. कई बार वाटर भी इरिटेंट इफेक्ट्स कॉज करता है स्किन में. तो अगर बच्चे को बार बार सुसु करता है या फिर पॉटी जानी पड़ती है, पॉटी करनी पड़ती है, एंड देन स्पेशली इफ दे आर वेयरिंग डाइपर्स, दैट एरिया इज प्रोन टू गेट इरिटेटेड अगेन एंड अगेन. सो इस चीज को हमें जितना पॉसिबल हो सके उसको प्रिवेंट करना है. सो प्रिवेंट करने के लिए हमें जो इरिटेंट मटेरियल है, दैट इज स्टूल और यूरिन और स्किन के बीच में हमें एक बैरियर बनानी है. सो व्हाट वी कैन डू इज, generally when we are washing our child, especially on that area, so now there are things to know about washing too. So I generally do not recommend wipes on cleaning that area. I would recommend to wash with a normal water or maybe a little soap water. Also try to clean with a soft cotton cloth, maybe your hands, the hands and the skin is the softest, and then mop dry it and not wipe it. Like mop dry it with a very clean cotton cloth, and then apply a layer of barrier cream. A barrier cream can be coconut oil,
It can be Vaseline or it can be prescription moisturizers. So let it dry. It is important to let the area get dry, because अगर wet area में हम moisturizer या oil या कुछ भी लगाएंगे, it becomes a food for the fungus growth. तो इसीलिए हमें ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद हमें, और ड्राई भी हमें मॉप ड्राई करना है, वाइप नहीं करना है, मॉप ड्राई करना है, बिकॉज स्किन सेंसिटिव होती है, वो छिल सकती है। तो उसके बाद उसमें एक बैरियर क्रीम लगाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, and then again put on the diaper or whatever you want to put it on. Now, this question about applying the moisturizers repeatedly, although it is cumbersome, but it will be important. Now, especially in diaper babies, it is not a common problem, because the diaper needs to be changed every 2 hourly or 4 hourly. So every time you change the diaper, you can just clean that area, apply a moisturizer cream. For a kid who is not wearing diaper, of course that area will tend to get irritated again and again and repeatedly. So yes, we have to apply coconut oil, barrier creams, and maybe other prescription moisturizers to create a barrier between the irritant material, जो कि stool या urine है, and the normal skin. So that is a way to prevent it. Now, अगर मान लीजिए हो गया है, डायपर रैश हो गया है, तो क्या करेंगे? तो these steps which I have explained in preventing the diaper rash will hold true for that area also. तो अगर एरिया सिर्फ रेड हो रहा है, थोड़े थोड़े से बम्स हो रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, what I have seen is that most of it gets resolved only by following these measures. But if the area is eroded, that means छाले पड़ गए हैं, या पस वाला दाना दिख रहा है, या फिर बहुत ज्यादा oozing हो रहा है, of course you do all this, but not wait, and you should immediately visit your dermatologist or your pediatrician, whosoever is the right person to guide about it. Because once the area has eroded, they have to give you creams which will heal it. Some of it contains zinc oxide and other prescription. It might need a topical antibiotic also if it is secondarily infected, but that is something that your physician will decide. So prevent it, and in treatment also the steps of prevention will hold true. In addition, अगर कुछ करना है, so that is something that your physician will decide. बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, जैसे ये वाइप्स की जो बात बताई है ना, हम मेरी एज ए पीडियाट्रिक कोपीडी में भी ना, जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको मतलब जब भी वो क्लीन करने का प्रोसेस है मदर्स के पास, न्यू पेरेंट्स के पास स्पेसिफिकली, तो वाइप्स लुक्स लाइक द मोस्ट आई मीन द इजीएस्ट वे टू डू द जॉब, पर एज सच इट सजेस्ट वाइप्स मींस वाइप, एंड टू वाइप the most contraindicated, I mean most I would say not to do the thing. तो मेरा मतलब यही होता है कि मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वाइप ही तो नहीं करना, इसलिए वाइप्स यूज नहीं करना, तो you can just keep the that dry by mopping and drying it and then applying the coconut oil or as you said Vaseline. So that was a wonderful. Right, wonderful. And even if you have to use wipes, अगर आपको करना ही पड़ा, you are traveling somewhere, so try to use a moisturizer based wipe, something which contains aloe vera, and not alcohol based wipe. Basically alcohol should not be applied to that area. And आप wipe करने के बाद भी make sure that you carry an emollient and apply it immediately, अगर even if you have to use a wipe. So emollient, keep the area barriered, do not let it touch any irritants. So, ये आपका जो आपने अभी बोला कि कैसे वाइप्स अगर लेनी है, यूज करनी है, तो एक क्वेश्चन रमा जी का भी था कि हम अगर वाइप्स यूज कर रहे हैं तो किस तरह के वाइप्स यूज करें, तो एक्चुअली यू हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन आल्सो। तो रमा जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा पूछ रही हैं ये मोहाली से। तो सीमा कह रही हैं कि हेलो डॉक्टर, माय डॉटर हैज सीवियर डैंड्रफ प्रॉब्लम, so what do you suggest for this? Right. So this is a little difficult question, because dandruff can be of different types, and even as a dermatologist, we have to differentiate between the different kinds of dandruff. Now, dandruff basically होता है whitish flakes, जो कि आपके स्कैल्प में होता है, जो whitish कलर का छिलके जैसे दिखते हैं, ठीक है। अगेन एक उसका नॉर्मल वेरिएशन भी होता है, and then it can be a part of a disease also. Now, so how do we differentiate it? I think so something which is just very flaky,
आपका कहीं कहीं पे दिख रहा है, स्किन से इजीली निकल रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी कॉल डैंड्रफ या फिर सिबोरिक कैपिटिस कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटी डैंड्रफ शैम्पूज व्हिच कैन बी द कमर्शियल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, or we also recommend the medicated shampoos. Now which one to apply and how frequently to apply, that is something that has to be assessed in the OPD. So we have to see that आपका जो डैंड्रफ है वो नॉर्मल वेरिएंट है, स्किन थोड़ा सा फ्लेकी हो रहा है, ड्राई हो रहा है, या फिर सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें येलोइश ग्रीजी स्केल्स होता है, थोड़े से एरिया भी इन्वॉल्व हो सकती है, काफी बड़ा एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है उसमें स्कैल्प के अलावा, मतलब आपके हेयर के अलावा बाकी एरियाज में भी कई बार मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे कि नेजोलेबियल फोल्ड्स हो गया, पेरियोरल एरिया हो गया, है ना, और बॉडी में ट्रंक में भी कई बार कुछ एरियाज में कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन दिखता है। सो जब आप विजिट करते हो डर्मेटोलॉजिस्ट को तो वो बाकी एरियाज भी आपके एसेस करते हैं और फिर उस हिसाब से आपको बताते हैं कि आपका नॉर्मल वेरिएंट ऑफ डैंड्रफ है या फिर आपका सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। कई बार सोराइसिस भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है। जो सोराइसिस नाम की एक कंडीशन, स्किन डर्मेटोसिस होती है, जिसमें स्किन में हमारे लाल रंग के धब्बे पड़ते हैं, उसमें मछली की तरह छिलके होते हैं, एंड वही चीज आपके स्कैल्प में भी हो सकती है। सो ये 3-4 चीजें हैं जो बालों में ड्राइनेस या फिर स्केलिंग या फ्लेकिंग की तरह प्रेजेंट कर सकता है। सो या आई थिंक यू हैव टू सी योर स्किन स्पेशलिस्ट टू नो व्हाट इट इज एंड देन टू फाइनली प्लान योर evaluation and management. So actually, you are absolutely right to differentiate between seborrheic dermatitis and psoriasis and different problems that can be difficult. तो हमें पेरेंट्स को सिर्फ ये देखना है कि अगर वो ड्राइनेस एसोसिएटेड, अगर आप सिर के ऊपर, मैं कहता हूँ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द हायर फ्लोर, तो अगर सिर के ऊपर आपको फ्लेक्स दिख रहे हैं और अगर वही वाले फ्लेक्स दिखने के साथ साथ आपको आईब्रोज पे, कंधों पे, कान पे भी कान साथ पे में ड्राइनेस दिख रही है, तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज द डैंड्रफ, seborrheic dermatitis is actually falling onto the your tip of the nose, your eyebrows, your ear and then the shoulders. तो बहुत ही कॉमन है न्यूबॉर्न बच्चों में, इन्फेंट्स में, तो दैट यू कैन make out roughly, but you should consult your doctor to get the proper advice and medication. तो आगे राइट। और किसी भी एरिया को लाइक स्पेशली इफ दिस इज अकरिंग इन एन इन्फेंट, लाइक अगर 1 साल से छोटे बच्चे में अगर हो रहा है तो हमें अगर आप नहीं भी विजिट कर पा रहे हो तो आप इतना डिफरेंशिएट आपको कर लेना चाहिए कि जो है ना, अगर बच्चे में कुछ सीरियस की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं भी अगर आपको एक लेवल के बियॉन्ड रेडनेस दिख रहा है या फिर कोई क्रस्ट दिख रहा है जो अडहेरेंट है, जो नहीं निकल रही है, जैसे हम बच्चों में तो बहुत हम एग्रेसिवली वो भी नहीं करते हैं, वी जस्ट फोम the soap or shampoo in our hand and then we just use it. So in that regular process is, if something is not getting taken care of, then I think we should visit a dermatologist. और कहीं भी अगर abrasions हो रहा है, छिले हुए दिख रहे हैं, because it can be a focus of super added infection, तो हमें वो नहीं बनने देना है. We should not let anything abrade to that extent कि secondary infection हो जाए उस area में. Yes, absolutely. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमी जी पूछ रही हैं कि शुड वी यूज मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एज ए रूटीन इन ए न्यूबॉर्न ड्यूरिंग विंटर्स? In it will depend actually. So it will depend upon a lot of things. It will depend upon the genetics of your baby, right? So if parents have had a history of dry skin and atopic skin, it is very likely that your kid will also have atopic skin or dry skin, and that will be visible in your baby. So if you do see evidence of dryness, xerosis, or redness in children, all these things will present as redness and also xerosis, then of course you should apply it. Even as a routine, I do recommend moisturizing the skin after taking bath or after having used a soap or something. It always helps your skin to get that glow and that suppleness on your skin. So if I have to summarize it in a nutshell, yes, I think we should moisturize the skin after cleaning the area, be it adults, be it babies, be it children of any age. Good. So
The next question is from Kirti. She is asking that face की skin black क्यों लगने लग जाती है सर्दियों में और ड्राई भी रहती है, तो जितनी मर्जी क्रीम लगा लो कोई भी फायदा नहीं होता, और हमें कौन सा फेस वॉश यूज कर लेना चाहिए या कौन सी क्रीम यूज कर लेनी चाहिए, हर डॉटर इज 13 years old, तो कि इस प्रॉब्लम से वो बच सकें। So this question is for her daughter, और कि हर face का डॉटर इज skin. 13 years old। Yeah, okay. So the face is getting dry and dark, and which creams to use and which soaps to use, right? So, yes, yeah, dry skin does get darker over a period of time, and hydrated skin will always remain a little clearer and also soft and supple. So, um, the darkness on the face can be because of dryness. It can also be because of the UV rays, right? Because the face is more exposed to the sun as compared to other body parts, and the UVA rays in the sun, it actually leads to photo tanning, or which can be immediate pigment darkening or persistent pigment darkening. So the darkness on the face can be because of both reasons. Dryness के कारण भी हो सकता है, और जो exposure to UV rays है उसके कारण भी हो सकता है. तो फेस में को हाइड्रेट करना है, और साथ में नाउ कमिंग टू द यूज ऑफ सनस्क्रीन्स एंड फोटो प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन. I do not recommend it on a daily basis, because I feel that it somehow hampers the lifestyle of the kids, because they are at this age where they are out in the ground playing and doing other activities. It is not possible for them to keep applying sunscreens again and again, and the darkness that can happen with the UV rays is actually reversible. So अगर हो भी जाता है, पिगमेंट डार्कनिंग हो भी जाती है, so eventually it is reversible, and the skin does get back to its normal or the usual tone. So there is nothing much to worry about. I think we should hydrate the face, hydrate the skin, and for the sun exposure part, if the child is having problems with the sun, like the child is going out and he's having burning sensation, redness on going out in the sun, tingling sensation, that may be an indication of using sunscreens. But otherwise, I think that is good enough. I think let the child go out and play and do their activities, just be hydrated well. Also, again, I'm reinforcing this fact that hydrating the skin immediately after bath is very important, right? And especially in winters, there is one more thing that should be taken care of. The bath should not be taken with very hot water. So I generally recommend lukewarm water to take bath, because hot water also causes the skin moisture to like get lost, and then it does compound, it does add to dryness in the skin. So the bath should be given with lukewarm water, be it for like very small kids, which can be infants or children, even for adults. The bath water should be lukewarm and not very hot. After taking bath, mop your kid's body with a dry, clean cotton cloth. Again, do not rub it vigorously. And then, while the skin is still a little wet, smear the moisturizer all over the body. So that process helps in hydrating the skin for a longer period of time, and you will need to use moisturizers less frequently that way. Right. So I will also request the audience to keep posting their queries as and when they have any. I would like to address as much as we can, because these are very valid questions. The ones that we have been getting, most of my patients who come visit my OPD during the winter days, they come with me with all these concerns, and I think we should address them very appropriately. So I'd also request the audience now again, and if you have any more comments or any more queries regarding anything in your kid's skin, so you can drop the in the comment section, and we will definitely address it for you. यस एब्सोल्युटली राइट एंड प्रोबेबली कुछ पेरेंट्स इस टाइम पे ज्वाइन लेट करे होंगे, तो मैं फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन भी लाइव पूछ सकते हैं, लाइव आंसर हम आपको दे देंगे। और सेकेंडली, अगर बाय चांस कुछ पेरेंट्स इसको बाद में देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो वो भी अपने क्वेश्चंस इस कमेंट सेक्शन में डाल दें। वी विल पिक अप दिस क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 2 days एंड देन ट्राई टू आंसर देम in the comment section itself, or maybe we will find some way to reach you and answer your questions. Right, तो आगे चलते हैं। तो जी सर। अगला क्वेश्चन
हरपिंदर का है, वो पूछ रही कि मेरा बच्चा 9 महीने का है और उसके छोटे-छोटे से पिंपल्स और रेडनेस हो गई है चिन एरिया में। तो उसका क्या कारण हो सकता है और मैं उसको कैसे ठीक करूँ? 9 महीने का बेबी है और पिंपल्स आ गए हैं चिन एरिया में। लाइक स्मॉल पिंपल्स हो गए हैं और रेडनेस हो हाँ, गई है चिन एरिया में। right, agree. Okay, so pimples is a very common term. Pimples का मतलब अगर मैं अभी इसको थॉट प्रोसेस में डालूं तो इट विल बी रेड कलर का थोड़ा सा रेज्ड सा बम्प के जैसा होगा ऑन द चिन एरिया. सो जनरली पिंपल्स हम उसको कहते हैं जो ऑयल ग्लैंड के ब्लॉकेज के कारण होता है जिसमें बैक्टीरिया सेकेंडरीली इफेक्ट करती है. इट इज मोर कॉमन आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है, और वो चीक्स एरिया में, फोरहेड एरिया में आते हैं. चिन एरिया में पिंपल्स जनरली जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होता है स्पेशली फीमेल्स उनको आते हैं. सो if a child, if a parent is noticing bumps, maybe pimples on the chin area of the child, I think it is something else. Right, it can be a lot of things. Sometimes there can be small pustular eruptions in the child, so it can be a bacterial infection, or sometimes it can just be an insect bite. So बच्चों को insect bite hypersensitivity की भी tendency होती है, sensitive to the exposed area of the face. So एक जगह पे insect bite होता है और hypersensitivity के कारण बाकी areas पे भी bumps आ जाती है. So it will actually be a very difficult question to address without looking at the picture. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं और वो खुद ही सबसाइड नहीं हो रहा है तो आई थिंक इट इज बेटर टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज हाँ, पिंपल्स 9 ईयर बच्चे में होना नहीं चाहिए. अच्छा, पिंपल्स होते हैं बच्चों में बट वो जनरली इनिशियल डेज में ही हो जाती है, लाइक फर्स्ट 15 डेज और फर्स्ट 1 मंथ में, बिकॉज दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मेटरनल हार्मोन्स. जो मदर के बॉडी में जो एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो हार्मोन्स होता है, वो बच्चों में पास होता है, तो वो जनरली फर्स्ट 1 महीने में के अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है. तो इसीलिए बिकॉज इट इज अ 9 मंथ ओल्ड चाइल्ड, 9 महीने का बेबी है, तो 9 महीने के बेबी में हमें पिंपल्स जनरली नहीं दिखते हैं. सो इट कुड बी समथिंग एल्स एंड नॉट अ पिंपल, में भी फॉलिकुलाइटिस, सिम्पटाइगो या कुछ हो सकता है. तो उसके लिए आई थिंक इट इज बेटर टू बी आई सी. थिंक इसको थोड़ा सा पीडियाट्रिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ कि कई बार ये जो पिंपल्स, जो चिन एरिया रेड होना और यहाँ पे छोटे छोटे जो पिंपल्स दिखने, दैट यूजुअली स्टार्ट्स हैपनिंग 6 months 7 months onwards. That usually is because we have started feeding the child, and that is also because while the child is also drooling when he is on dentition. So इन दोनों से जब वो डेंटिशन करता है, ड्रूल करता है या कुछ खाते हुए उस टाइम पे या कुछ भी पी रहा है, तो उसको बिकॉज ही समटाइम्स बिकम्स अनमैनेजेबल, उसको थोड़ा सा पकड़ना करना मुश्किल है, तो वो बारी बारी से वो एरिया जब गीला हो जाता है तो मदर उसको वाइप करती है बारी बारी से. सो समटाइम्स दैट बिकम्स अ बिट रेड. सो दैट यूजुअली इज अ वेरी सटल सॉर्ट ऑफ थिंग, कुछ उसके लिए खास नहीं करना है. आप बस उसको अगेन नो वाइप्स, नो वाइप्स ऑल ओवर द बॉडी, वाइप ना करें, जस्ट मॉप ट्राई करें, दैट शुड गो ऑफ. बट स्टिल इफ यू थिंक कि वो परसिस्ट कर रहा है तो अपने डॉक्टर को मिल लें, क्योंकि देखने से, हिस्ट्री लेने से ही कई बार सिचुएशन या जी. प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना ज्यादा इजी होता है डॉक्टर के लिए. Right, sir. And then actually, yeah, on this point, I would also like to add one other point. I actually, yeah, I missed this point जो आपने बताया कि ड्रूल करने से और कई बार खाने से, वाइप करने से. एक और कंडीशन होती है जिसमें चिन एरिया और पेरियोरल एरिया में ऐसे ही जैसे वे बता रही हैं पिंपल्स के जैसे इरप्शन होता है, एंड दैट इज समटाइम्स कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. कुछ बच्चे होते हैं जिनको बफेलो मिल्क से इनिशियल डेज में टॉलरेबिलिटी नहीं होती है, और जब हम ये फूड्स खिलाते हैं जिसमें कि सॉलिड जो है ना, सॉलिड मिल्क क्यूब्स या क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि सेरेलैक, कई बार ये सब नेस्ले के होते हैं, तो वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि खिलाने के बाद जहां जहां टच हुआ है उन सब एरिया में ऐसे रेड कलर के बम्प्स आ गए हैं. सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट योर किड इज नॉट रेडी फॉर दैट फूड येट. उनका इम्यून सिस्टम बना नहीं है और वो उसको नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं. सो ऑल्दो खाने के बाद कुछ नहीं होता है, द बेबी डजंट हैव लाइक स्टमक पेन और एनीथिंग, बट स्किन में वो मैनिफेस्टेशन होता है, वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, लेकिन दैट इज एन इंडिकेशन दैट you should not be giving that food to your baby. Yes. तो अभी एक क्वेश्चन हमारे पास साध्वी जी ने पूछा है कि मेरे बच्चे के, माय सन इज हैविंग वॉट्स 2 on hands and 3 on face. I do not Okay. want to go for
any surgery. He is 4 years old. What medicine can I apply? तो ये सर्जरी नहीं कराना चाहती हैं वॉट्स के लिए, तो कोई रेमेडी पूछ रही हैं कि मेडिसिन देने से ही कुछ ठीक हो जाए, तो सर्जरी जी इनको जी सर्जरी एडवाइस। जी जी। तो सबसे पहली बात है कि जिसको हम वॉट समझ रहे हैं, हमें श्योर होना चाहिए कि वो वॉट ही है कि मस्से हैं, क्योंकि स्किन में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक वॉट्स होता है जो वायरल वॉट्स होता है, और दूसरा कई बार बच्चों में मोलस्कम कंटेजियस नाम का एक वायरस होता है, उसके कारण भी लीजन्स हो जाते हैं जो छोटे छोटे बम्प्स जैसे दिखते हैं। सो इट कैन बी दैट ऑल्सो। एक्चुअली इट कैन बी डन विदाउट सर्जरी ऑल्सो। तो उसमें एक हम वो करते हैं, एक एसिड होती है, टीसीए कहते हैं उसको, 100% या बच्चों के हिसाब से 70% या 50% भी लगाते हैं, बट उसको रिपीटेड लगाना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास आते हैं और वो एक बार एक सेशन में कुछ लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद दोबारा आना पड़ता है। तो ऐसे कई बार 8 से 10 सेशन लग जाते हैं एक पर्टिकुलर वार्ड को ठीक होने में। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ये इन्फेक्शियस होता है। जब तक हम ये 10 वाट को ठीक करते हैं, तब तक ये 10 वाट बाकी जगह पे फैल के बाकी वाट्स बना सकते हैं, बिकॉज it can be transferred with your fingers, with your nails. So the kid, or for that matter even adults, will have a tendency to scratch that or do that, और फिर उसी हाथ से कहीं और छुएंगे। तो जहां पे हम लगा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसको तो हम ट्रीट कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नोटिस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी जगह पे भी फैल गया है। तो आइडियली बेटर यही है कि जो है उसको एक बार में निकाला जाए। इट कैन, सर्जरी जरूरत नहीं है, कॉटरी करते हैं, कॉटरी में रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी मशीन से उसको निकाल देते हैं। ऑफकोर्स सुन करके लगाते हैं, बच्चे को पेन उतना नहीं होता है, ठीक है, बट द राइट वे टू गो अबाउट इट इज दैट कॉटरी भी करते हैं, और एक क्रायो फ्रीजिंग भी होता है जिसको क्रायोथेरेपी कहते हैं, तो क्रायो भी कर सकते हैं, उसमें भी 1-2 सेशन में बेटर हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर चाइल्ड कोऑपरेट करता है तो उसको निकलवा दीजिए। बट हैविंग सेड दैट, वी डू फेस डिफिकल्टी इन डूइंग ऑल दीज प्रोसीजर्स इन द किड। सो इफ द चाइल्ड इज नॉट कोऑपरेटिव, हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देन वी कैन गो फॉर दिस टीसीए ऑप्शन, जो केमिकल कॉटरी का ऑप्शन है। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो अगला क्वेश्चन छवि जी का है। वो पूछ रही है कि ड्यूरिंग विंटर्स आई अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन द होल बॉडी ऑफ माय बेबी while he bathes, and I rinse off with warm water so that the body remains moisturized. So, but I am concerned if this will affect his body color. क्या कोई जो उसका कलर है वो डार्कन तो नहीं हो जाएगा इससे, इस प्रैक्टिस से, या कोई और ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है इसको इसको बारी बारी से ऐसे करने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, दिस विल नॉट लीड टू डार्कनिंग ऑफ द स्किन। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट शी इज अप्लाइंग कोकोनट ऑयल एंड देन रिंसिंग ऑफ विथ lukewarm water, and that is a way to hydrate your skin actually. So if at all, it is going to add to the health of your skin, and it is not going to make the skin dark or anything. So I think you can continue to do that, not an issue. कई बार कोकोनट ऑयल लगा के फिर the baby is given bath, and then the parents apply moisturizer or coconut oil again, that is also totally fine. So once we have applied coconut oil and then washed with the soap, that coconut oil is gone. So we should understand, then we have to hydrate the baby again with the oil or prescription moisturizers. राइट। तो अगला क्वेश्चन एक पूछा है सुदिति जी ने, ये लाइव क्वेश्चन अभी आया है कि ये अपनी किसी फ्रेंड के बिहाफ पे पूछ रही हैं कि उसके बच्चे के जो लिप्स हैं वो बारी बारी से ड्राई हो जाते हैं, वो बारी बारी से लिप स्मैकिंग टाइप्स ऐसे मूवमेंट्स करता रहता है बच्चा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? हाँ डॉक्टर Right. अदिति, बहुत ही कॉमन है जब ये ड्राइनेस होती है लिप्स के ऊपर, तो रिफ्लेक्सली बच्चा उसको मॉइस्चर करने के लिए फिर से उसको like these sort of movements करता है और वो और ड्राई होते जाते हैं। And how to break this cycle and how to prevent it and how to treat it if it has already happened. बिल्कुल बिल्कुल, या ये आई थिंक इट इज अ वेरी कॉमन हैबिट ऑफ किड्स, एंड लाइक ऑल ऑफ अस एज पेरेंट्स एंड एज डॉक्टर्स हैव फेस्ड दिस. So this is a normal human tendency. Like if you have dry lips, the first thing is to, if you don't have a water in your hand but you have water in your mouth, and then you tend to lick it with your lips. But this is a vicious cycle because our saliva contains enzymes which can actually degrade the natural moisturizing factors. तो जहां हम उसको मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको कंफर्ट देने के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसको वर्स कर रहा है. इट इज मेकिंग इट वर्स. So making it understand to an adult is possible, but how do we make it understand in the
in the kid. So here comes the role of behavioral therapy. So that is something that the parents should do, that the doctors should do. Reinforce, reinforce, reinforce. उनको बताना है कि नहीं करना है, नहीं करना है. At the same point of time, treating that thing. So applying moisturizing factors over that area in the form of a Vaseline or a moisturizer or even oil. Parents also apply ghee if it is pure. I think that can also be done. तो एक बार बार मॉइस्चराइज करके जब वो एरिया मॉइस्ट हो जाता है, if that problem is taken care of course the kids will stop leaking it. But in kids this cycle is longer because it is difficult to explain it to them. और तो स्पेशली मैं क्या रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स को कि जब बच्चा रात में सोने जाता है उस टाइम पे एक थिक लेयर मॉइस्चराइजर का उनके लिप्स पे लगाइए, बिकॉज दैट टाइम is the best time where they will not smack it up or they will not lick it up. So night time में एक thick layer moisturizer का lips पे लगा दीजिए, you will definitely see an improvement in the morning. और अगर वो एरिया फिस्टर्ड हो गया है या फिर उस पे कट्स आ गए हैं, then I think you should see a doctor, because then he or she might give you a combination of some antibiotics or some mild steroids to see that area. But till it is dry, not fissured and everything, you can just use moisturizers, preferably at night time in a good amount, at the time where they are not likely to lick it up, and then break that cycle. So breaking that cycle is very important, कि हम एक तरफ हम ये कोशिश करें कि ड्राई ही ना हो और दूसरी तरफ उनको reinforce करें. I am not an expert in that field, behavioral therapy in kids, but then some amount of therapy जो है ना, as pediatricians सर आप बता सकते हैं. Sometimes parents are the best doctors, I think, for children, because they know what behavior reinforces what. So I think they are, I leave it up to them कि आप कैसे समझाओ, ये आप ही decide करिए. You're absolutely right. ये I could just realize by your saying so कि ये vicious cycle break करना बहुत जरूरी है, जो dryness and licking, dryness and licking. तो the best way that I could learn from you is कि रात का टाइम ही ऐसा है जब वो शायद अपने आप से लिखने उस टाइम पे थिक लेयर लगाने, definitely it will help. इनमें reinforcement, अगर पहले आपने behavioral reinforcement नहीं करी तो एकदम से ऐसी you cannot put into force, आप कर नहीं पाते हो. तो ऐसा रात की thick layer of moisturizer Vaseline on lips, and similarly रात की ही अगर एक good amount of a moisturizer और एक coconut oil over the body during winters, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा देती हैं to keep the skin moist, and also I would say that becomes a barrier, एक तरह के लेयर बना देती हैं स्किन के ऊपर और बच्चे को ठंड से भी बचाती हैं ऐसा करने से. So that actually really a good idea to actually do apply moisturizers and coconut oils during I mean just before going to bed. बिल्कुल बिल्कुल. सो एक बार मैं वही कहती हूँ कि एक बार आप जब भी आप नहलाते हैं उस टाइम पे यू आर लाइक टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स फॉर योर चाइल्ड. सो नहलाने के बाद मॉप करके पूरी बॉडी पे लगाइए. एंड वंस in general, parents, Indian parents and some, like other parents also, they have a tendency to give massage to their kids in the night time before going to sleep. So that time again it is a good time to like apply liberal amount of moisturizers to your baby's skin. And then because the skin is going to rest, so right then that time also you can apply it. So at least 2 times a day. In winters, giving an advice कि moisturizer 4 बार 5 बार लगाइए, and following that is very difficult because in winters the children have multiple layers of clothes, so it is impossible to take off the clothes and apply it again and again. So at least 2 times a day after taking bath and then once before going to sleep. तो सिमिलरली आपने जैसे अभी क्रैक्ड लिप्स की बात करी थी, वैसे ही एक क्वेश्चन, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, रमा पूछ रही हैं कि हाउ कैन आई ट्रीट क्रैक्ड स्किन ऑन माय स्किन चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट. Okay, right. Okay, so in general, we do not see fissuring of skin in children, right? Because बच्चों का स्किन इन जनरल सॉफ्ट होता है, सो बाकी जगह पे भी हम देख भी सकते हैं, बट हाथ और पैर में इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएशन टू सी क्रैक्ड हैंड्स एंड सोल्स. So if a child is having cracking or fissuring of palms and soles, there are 2 to 3 things to consider. So fissuring or redness or cracking of palms and soles can be a manifestation of an underlying problem, which can be atopic dermatitis, it can be psoriasis, it can be PRP, एक pityriasis rubra pilaris नाम की चीज होती है, ठीक है. तो वो हो सकता है बच्चों में, ठीक है. कई बार किसी चीज से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो जाती है, दैट समथिंग दैट द किड्स आर प्लेइंग विद,
और लेइंग देयर बेयर फुट ऑन, ठीक है, तो उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. If it is a variant, if it is a normal variant, if the parents also have history of dry skin, have history of dryness on the palms and soles and everything, so that can be again taken care by applying moisturizers again and then repeated use of moisturizers. But if it is if it is more severe, and if it is a persistent problem, something that the parent is able to notice and it is chronic, then I think it is better to visit a dermatologist to see if there is any other diagnosis that needs to be taken care of. Because in general, cracked palms and soles in a children is not common. So we need to relook on that area. ये अभी एक लाइव क्वेश्चन आरती जी का आया है. ये पूछ रही हैं कि हाउ इज दिस, आई मीन हाउ कैन आई रिमूव हेयर फ्रॉम बेबी स्किन. कई बार हमने देखा ना पीठ के ऊपर या कई हिस्सों में बॉडी के कुछ बाल दिखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स. सो क्या वो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू रिमूव दैट? No, I do not recommend any procedures, any maneuvers to remove the hair on the baby's skin. The baby's skin is very soft, very thin as compared to adults, and anything aggressive might interfere with the functioning and might interfere, it might cause abrasions and irritation on the skin. So, any excessive hair on the body, generally in the infancy it is normal to have like extra vellus hairs on the baby's body, which sheds off eventually. वो शेड ऑफ हो जाता है इवेंचुअली, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज समथिंग दैट इज हेरिडिटरी, उसको एडिशनल प्रोसीजर्स करके हम टेक केयर नहीं कर सकते, और इनफैक्ट करना नहीं चाहिए. बिकॉज वट एवर थिंग्स वी डू, इट विल नीड टू एपिलेट दैट हेयर ऑन द बॉडी, विच इज नॉट सेफ टू डू इन अ बेबी स्किन. सो हमें कुछ नहीं करना चाहिए. अगर एक्स्ट्रा वेलस हेयर्स हैं वो खुद ही शेड हो जाएंगे, और अगर वो नहीं शेड हुए, दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेबीज genetics and it can be taken care of later. There are many modes of removing hair on the body, which can, with the child can himself or the parents can take decision when he or she enters puberty. So it can be left to that. Please do not do any aggressive methods to remove the hair on the baby's body. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अभी. तो वो पूछ रही हैं मदर कि अब सर्दियों में बच्चे को लेके धूप में बैठने की रिकमेंडेशंस होती है, या हम खुद ही सोचते हैं कि ये 2-3 घंटे अच्छे हैं, बच्चे को भी थोड़ा सा साथ में गर्मी मिल जाएगी. एंड डॉक्टर्स, वी एज डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियंस आल्सो से सो यू कैन कीप योर बेबी इन सन सो दैट ही फील्स बेटर. और कुछ मेडिकल बेटरमेंट्स भी आजकल बहुत इंटरनेट पे मिलती हैं कि बच्चे को धूप में अगर डालते हैं तो बोन्स स्ट्रांग होती हैं या वेल बीइंग आती है. तो अब इन मदर जो है श्रुति, वो पूछ रही है क्या अगर मैं ऐसे धूप में बच्चे को डालती हूँ तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ सनबर्न्स तो नहीं हो जाएंगे, या मेरा बच्चा उसका कंप्लेक्शन डार्क तो नहीं हो जाएगा? सो व्हाट शुड आई डू? Right. So there is two aspects to this question. एक है कि सन बर्न तो नहीं हो जाएगा, और दूसरा डार्क तो नहीं हो जाएगा. So I'll address one thing first, है ना, सन बर्न. So इन जनरल हमारी जो इंडियन स्किन टाइप होती है, विच इज टाइप 4 या टाइप 5, इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेलानिन होती है, जिसमें जो कि हमारे स्किन को बर्न से प्रिवेंट करती है. तो जनरली इंडियन स्किन इज नॉट प्रोन टू बर्न्स. ठीक है, तो आप बच्चे को अगर लेके धूप में बैठ रहे हैं और बहुत ज्यादा रेडनेस, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, इट इज सेफ, यू कैन सिट. सम अमाउंट ऑफ फ्लशिंग इज नॉर्मल, इट इज बाउंड टू हैपन. एडल्ट्स भी बैठते हैं, उनको भी होता है. बट इफ योर बेबी एक्सपीरियंसेस पेन और इंटेंस रेडनेस, जो कि धूप से वापस आने के बाद भी नहीं सबसाइड होता है, दैट मीन्स ही और सी इज हैविंग सनबर्न्स. ठीक है, जनरली इंडियन स्किन में सनबर्न्स उन्हीं को होता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं. कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे जेरोडर्मा पिगमेंटोसम या वो कुछ, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वेबिनार. बट इन जनरल इट इज सेफ टू सिट विथ योर चाइल्ड इन द सन इन विंटर्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि बेबी का स्किन डार्क तो नहीं हो जाएगा. सो मैंने बताया था कि इंडियन स्किन इज नॉट प्रोन टू बर्न्स, बट इट इज प्रोन टू टैनिंग. तो टैनिंग होगी, ठीक है, बच्चे का स्किन डार्क हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट होगा, ठीक है, बट दैट अगेन इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज इट इज रिवर्सिबल. वो जैसे ही
प्रोलॉन्ग डिस्पोजर का ड्यूरेशन खत्म होगा, और वैसे ही इट विल गेट बैक टू देयर नॉर्मल स्किन टोन. सो इफ योर डॉक्टर इज रिकमेंडिंग you to sit with your kid in the sun, actually it helps. It is a source of vitamin D, so it is actually helpful. It is, in fact, phototherapy is used in many other conditions also for treatment. So it is absolutely safe. You can sit with your child in the sun. पिगमेंट डार्कनिंग होगी, एक होता है इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग, ठीक है, और एक होता है परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग. पिगमेंट डार्कनिंग होगी बट वो रिवर्सिबल होता है, तो उसके लिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन सेफली सिट विद योर किड इन द सन, नॉट एन इशू. So next question is, Dr. Aditi, that what should I do for if my child develops a rash or other skin irritation during winter season? रैश और अदर स्किन इरिटेशन. एज ए पीडियाट्रिशियन कि जी. विंटर सीजन में कोई भी रैश होना, दैट जैसे पहले बताया ड्राइनेस ओरिएंटेड कुछ भी होना, तो दैट इज ओके, दैट यू थिंक दैट सम स्किन प्रॉब्लम इज देयर. लेकिन विंटर्स में एक रैश जो मैं हमेशा एज ए पीडियाट्रिशियन वुड लाइक टू टेल माय पेरेंट्स, माय पेशेंट्स, दैट अगर आपको रैश के साथ कोई फीवर दिख रहा है या रैश के साथ कोई कफ एंड नेजल डिस्चार्ज एक्सेट्रा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्दियों में उसको इग्नोर नहीं करें. तो अपने पीडियाट्रिशियन से जल्द मिलें, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस, देयर आर मेनी आई मीन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन which present with rash and fever, and they are a bit complicated and say need urgently some sort of treatment. And from dermatology point of view, I think I would ask you, Dr. Aditi, to answer this question. Yeah, right. So rash in children, कुछ रैशेस होते हैं जो ट्रांजिएंट होते हैं, और जनरली जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे इंसेक्ट बाइट के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज अडल्ट हमें एक जगह पे अगर मस्कीटो बाइट करता है तो हमें वहां पे रेडनेस होती है, रैश होती है, ठीक है. बच्चों में एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें क्या होता है कि एक जगह पे भी अगर आपका इंसेक्ट बाइट करता है तो शरीर के बाकी हिस्सों पे भी आप रेड कलर के रैशेस देख सकते हैं, ठीक है. बट दीज आर अगेन ट्रांजिएंट, होता है, धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है. सो वन थिंग इज दैट. सेकंड होता है किसी चीज से कांटेक्ट के कारण, जैसे है कि मान लीजिए आपने कोई वो किया, ऑयल यूज किया, ठीक है, या फिर कई बार कुछ ऑयल्स में भी एलर्जेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कारण ये हो जाता है. सो यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू दिस एक्सोजेनस फैक्टर्स. थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्पेक्ट इज ड्रग रिलेटेड रैश. जब हमें बच्चों को फीवर होता है या पेट में दर्द हुआ या जुकाम हुआ है, कुछ हुआ है, हम कई बार ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस दे देते हैं कि ले आके एंड देन वी गिव इट टू आवर चिल्ड्रन. इट कैन बी पैरासिटामोल, इट कैन बी मेट्रोजिल, इट कैन बी एनीथिंग. द मेडिकेशंस कैन आल्सो लीड टू ड्रग रैश, ठीक है. और ऐसे केसेस में वो रैश को अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ड्रग रैश कैन बी सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है. एंड इट कैन हैपन टू एनी मेडिकेशन. पीसीएम से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है. तो कुछ कंडीशंस होता है जैसे कि एसजेएस होते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टीएन, वो ऐसे ही शुरू होता है, एक छोटे से रैश से शुरू होता है. इट कैन एक्चुअली involve the whole body. So I generally counsel the parents of my kids patients to not ignore any kind of rash to visit your dermatologist, because when we see kids with SJS and TN, we feel very regretful that hopefully अगर पहले आ जाते हम पहले रोक लेते. So rash, स्पेशली डॉक्टर साहब जो आपने फीवर विथ रैश भी कहा, तो फीवर विथ रैश में भी जैसे अभी के टाइम में मानिए डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारे फीवर सभी हो रहे थे. सो फीवर के साथ भी जो रैश आ रहा है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आपने बताया कि रैश के साथ अगर फीवर आता है वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वैसे भी उसको अटेंशन चाहिए. और फीवर विथ रैश अगेन ड्रग रिलेटेड भी होता है, कोई मेडिसिन के साथ भी जब रैश आता है उसके साथ फीवर आ सकता है, ठीक है. सो अगर रैश के साथ फीवर आता है, देयर इज नो ignorance to that. You should immediately go and visit your doctor. And sometimes some rashes like in dengue, it can be indicator कि आपका प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता चलेगा, बट आपके डॉक्टर जब देखेंगे तो वो उनको पता चलेगा कि हाँ, दिस इज एन इंडिकेशन कि आपका प्लेटलेट कम हो रहा है. सो स्किन कैन बी अ मिरर टू योर अंडरलाइंग इन्फेक्शन, कि हाँ यहाँ पे ये पेटेकियल रैश हो रहा है तो इसका मतलब प्लेटलेट कम हो रहा होगा, उसका इवेल्युएशन अलग तरीके से होगा. तो आई थिंक कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, जो डॉक्टर साहब आपने कहा, रैश के साथ अगर फीवर आ रहा है, ठीक है, नॉट टू इग्नोर इट,
ठीक है, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड से रैश अगर आ रहा है तो दिखा लो आप आके, जो है ना, इन किड्स वी शुड नॉट टेक रिस्क. Yes, definitely, definitely. So there is another live question that is, one of my friend is suffering from psoriasis. Any suggestions? Right. the, My the suggestion most valid the most valid suggestion is go and show it to your dermatologist, because yes, dryness can be advised on the dryness of skin can be managed by prescribing moisturizers and everything. Somebody who has a registered diagnosis of psoriasis, I think you should go visit your dermatologist, because psoriasis now it is well known that it is not limited to skin. Psoriasis on the skin has internal manifestations too. It is related, it is associated with metabolic syndrome. It can be associated with psoriatic arthritis. It can, अगर generalized है आपके scalp में psoriasis, so आपका management वेरी कर जाएगा कि आपके बॉडी में कितना एक्सटेंट है सोरायसिस का, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हर का मैनेजमेंट अलग होगा. So I think the best suggestion is to go and see your dermatologist. yes, definitely. So I think we have answered all the questions, and that's a good idea. There is one more question. अब जाते जाते last question ये ले लेते हैं. जी How सर, to जी select सर, हाँ. soap and shampoo for my baby? How to? Sorry, I How didn't get it. soap and shampoo for my baby? How to choose a soap and shampoo for my baby? Okay, right. So तो दो तीन चीजें हैं. एक तो है कि बेबी का फेशियल स्किन जो होता है वो बॉडी के स्किन से 4 से 5 गुना पतला होता है. इट इज थिन, राइट? So we have to be careful while choosing all these products. So what I generally say is, whatever you use, you should try to stick to that product should be as much as similar to the pH of your skin. So in general, the baby's skin pH is around 5.5. So any product which matches that pH, right? So there are some well-known brands which match that pH, but any product which has the same pH or similar pH to that of your baby's skin is good enough to be used as a soap or a cleanser. That's a And good do you answer. agree, Dr. Ajay? I think. Do you Yes, agree to it? definitely. हाँ, आई बिल्कुल आई एग्री टू इट. जितना नजदीक मतलब एक्चुअली दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एक्चुअली टू जज कि कौन सा. हम्म. अब ब्रांड्स इस टाइम पे इतने हैं मार्केट में कि कौन सा जी सर. ब्रांड is closest to your natural skin pH values, and what is the moisturizing effect of that, and what are the chemicals used in that. So that makes them actually afraid of they might not choose a wrong product. And every mother बिल्कुल. wants to select or choose the best product for the baby. Best for So the that child. is why they are more worried about. But मैं यही कहूँगा कि the closest to your skin composition वाले जो भी आपके products हैं उनको choose करें, and you can read the reviews. जैसे आप आजकल हर चीज के बात करते हैं तो different, you can talk to your friends and find out by mutual discussions and experiences what is the best product that they are experiencing with respect to the usage in their children. So वो आंसर वहां से मिल जाता है. एक क्वेश्चन इसको लेते लेते मेरे ही दिमाग में आया जो बहुत ही मेरी ओपीडी में पूछते हैं मदर्स कि हम दही से नहलाएं कि मलाई से नहलाएं. I would suggest soap से नहलाइए. Yes. Right. तो ये बहुत कॉमन चीज पहले होती थी जो बट इन दोस ओल्डर डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन से 5 to 7 years बैक, तो उस टाइम पे मैं कहता था भी दही से भी नहलाओ और मलाई से भी नहलाओ और दूध से भी नहलाओ. जो दही होगा वो थोड़ी सी एसिडिक पीएच में थोड़े से बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा, और जो मलाई और दूध होगा वो उसको वो मॉइस्चराइजर इफेक्ट मॉइस्चराइज करेगा. कर देगा. हाँ. कॉन्टिन्यूसली दूध से नहलाओगे तो इन्फेक्शन हो सकती है, कॉन्टिन्यूसली दही से नहलाओगे तो ड्राइनेस हो सकती है. तो ऐसे कुछ राइट. एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि दोनों ही जरूरी राइट. हैं. जी, बट आई So, मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि सोप से नहलाइए और मॉइस्चराइज करिए, ठीक है? yes, बिकॉज द definitely. प्योरिटी ऑफ एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नेवर नो कि कितना पुराना है, क्या है, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली. नाउ वी आर इन अ मॉडर्न एरा वेयर यू हैव सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. आई थिंक दैट लाइक वी कुड Yes, रिसॉर्ट टू and दैट. definitely we need to be on say जिसका कोई scientific proof है और जिसका कोई जिसको कहते हैं ना um, the value is of the proven things. So let's use थिंग्स the products which यूज्ड टू are स्टिक टू दैट. recommended.
साइंटिफिक। Right. तो ठीक है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एटलीस्ट आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम एक्चुअली दिस इज फर्स्ट ऑफ द सीरीज जो वी आर स्टार्टिंग टू से गाइड एंड share information regarding the health prospects with respect to your children or maybe with respect to yourself. We will begin with all the problems one by one for your child, and probably if we get more queries and questions and recommendations कि हमें ऐसा भी चाहिए कि कुछ adult questions का लिए, तो हम इस platform पे दूसरे डॉक्टर्स को भी इनवाइट करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोई भी आपकी कोई भी सजेशन हो इस प्रोग्राम के लिए, इस सीरीज के लिए जो हम आगे लेके जाने वाले हैं रेगुलरली, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को और अपने सजेशंस को हमारे पास भेजिए, सो दैट वी कुड फॉर्मुलेट द फर्दर प्रोग्राम एंड द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स दैट वी वुड बी टेकिंग अप सून। तो आज का सेशन Agree. यहीं खत्म Yeah. करते हैं, और आई Yes. वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अदिति for giving her valuable time. She actually has her OPD hours till say 7 o'clock, but she spared her valuable time to be here with us to answer your questions. So we are really grateful to you, Dr. Aditi, for being here with us and answering so elaborately and patiently all the questions pertaining to the skin problems in children during winters. Thank you very much. It was wonderful. Actually, I thoroughly enjoyed the session, and thank you, Dr. Ajay, for hosting this. I was especially happy to address all these questions because when I treat a skin condition, I have been taught by my mentor and my guide that whenever there is a skin condition, or for that matter any condition, कि दो पैचेस होता है, एक पैच होता है जो स्किन पे होता है, दूसरा पैच होता है जो माइंड में होता है। ठीक है। सो अनटिल अनलेस यू एड्रेस दैट पैच ऑन द माइंड, अगर हम मेडिकेशन लिख भी देते हैं, दवाई लिख भी देते हैं, जब तक हमने पेरेंट्स को समझाया नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, they will be eager to know about it. And I think I have been learning from you also, Dr. Ajay, when I sit just opposite to you in your OPD and I see how well you counsel your parents as well as your children. I think it is a reinforcement for me as well, and I would love to have more questions. I think I encourage patients, parents, kids parents to ask me as many questions as they can, because otherwise they will end up googling all those questions, and we are not sure if they will get the right answer. So I would request them to ask the right answer, the right question in the right place. पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है तो आप पीडियाट्रिशियन को पूछिए एंड गेट द इलैबोरेट आंसर, स्किन रिलेटेड है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए एंड यू विल गेट द राइट आंसर rather than searching 1,000 places about it. So thoroughly enjoyed this session. Thank you so much, the audience and Dr. Ajay, for hosting this session. It was wonderful, loved it completely, and thank you for posting the questions as well. थैंक यू वेरी मच अदिति। तो Okay. जल्दी ही मिलते हैं अपने जी, नेक्स्ट सेशन के साथ। आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने टॉपिक्स हमें भेज दीजिए, ताकि हम अगले सेशन की जल्दी से कोई प्लानिंग कर लें। जो भी आपके क्वेश्चंस हमारे को पहुंचेंगे, हम उसको वी विल बी टेकिंग देम सून। थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर नाउ। सी यू सून। थैंक यू। Bye, bye everyone.